Hello friends, welcome to Pharmatech. I'm Avinash and in today's session I will be explaining you the concept of racemic modification and how we can resolve a racemic mixture. So very first, what is the meaning of racemic modification? If you have some particular compound with you in which chiral center is present, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, टेक एन एग्जांपल ऑफ ibuprofen. सो ibuprofen जो है कायरल मॉलिक्यूल है, एस आइब्यूप्रोफेन भी एग्जिस्ट करता है और आर आइब्यूप्रोफेन भी एग्जिस्ट करता है. अगर आपके पास आइब्यूप्रोफेन का पाउडर है और उसमें उसका आर फॉर्म और एस फॉर्म 50:50 इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? जब भी आप वैसे पाउडर का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे, आपको क्या मिलेगा? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो ऐसे मिक्सचर को जिसमें दोनों भी इनएंशियोमर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, माइंड दिस वर्ड, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसेमिक मॉडिफिकेशन. अगर एक ज्यादा और एक कम है तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस में चला जाता है. सो यहाँ पर हम रेसेमिक मॉडिफिकेशन में क्या देख रहे हैं कि बोथ दी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म विल बी प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट. So rotation of the light caused by one form, that is dextro form, will get cancelled by the another form, that is levo form. That is why overall optical activity you will get as a 0. So we can say the racemic modification is optically inactive. And this is the reason which I have explained you, why we say it as optically inactive. So this is the meaning of racemic modification. Coming to the second point. So if you see various compounds from the nature, आपको ये पता चलेगा कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो इनएंशियोमेरिकली प्योर होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएंशियोमेरिकली प्योर? वो एक तो आर फॉर्म में होंगे या फिर एस फॉर्म में होंगे. इवन अपना जो बॉडी सिस्टम है, द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, सो दे आर प्रेजेंट इन वन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली. सो जो नेचुरली अकरिंग बहुत सारे कंपाउंड होते हैं वो इनएंशियोमेरिकली प्योर फॉर्म में होते हैं. सो हम उसका यूज करके जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल है उनको अलग कर सकते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूं कि इफ आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज आइब्यूप्रोफेन इन द लैब, सो आइब्यूप्रोफेन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. तो अगर उसको हमको सिंथेसाइज करना है, ऑलवेज हमको रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा है और हमारा टारगेट ये है कि वी वांट टू सेपरेट इट. सो हाउ वी कैन डू द सेपरेशन? सो दैट सेपरेशन कैन बी डन बाय यूजिंग certain naturally occurring compound which are enantiometrically pure. और ऐसे मेथड को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन सेपरेशन. आर फॉर्म को अलग करो, एस फॉर्म को अलग करो. चलो, एज आई सेड द एग्जांपल ऑफ ibuprofen, but you can say by luck ibuprofen, which is a widely used painkiller, can be, you can say, taken as a racemic mixture. अगर आप उसको प्योर फॉर्म में भी लेते हो तो बॉडी में जाके उसका रेसेमिक फॉर्म बन ही जाता है. सो बोथ दी फॉर्म्स आर इक्वली इफेक्टिव. सो क्या हो जाएगा कि आइब्यूप्रोफेन के बारे में इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा. बट अगर हम बात करते हैं नेप्रोक्सेन की, विच इज ऑफ द सेम कैटेगरी, तो उसमें क्या हो जाता है कि इन केस ऑफ नेप्रोक्सेन इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर अस कि हमारे पास उसका एस फॉर्म ही प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज एस फॉर्म ही एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी प्रीडोमिनेंटली दिखाता है. अगर उसका आर फॉर्म है तो यू विल नॉट गेट दैट एक्टिविटी. सो फॉर दैट सेक यू हैव टू रिमूव द आर फॉर्म ऑफ फ्रॉम द नेप्रोक्सेन का सिंथेटिक मॉलिक्यूल, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन. सो नेप्रोक्सेन एक क्या है? इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. So हम क्या करेंगे? We will make the carboxylic salt of naproxen. For that we will be using enantiomerically pure amine, because we can say हमारे पास acid है, with amine there may be a formation of salt. So they will react with each other. और वो amine हम कौन सा use करते हैं? N-propyl glucosamine. So N-propyl glucosamine is, you can say, naturally occurring enantiomerically pure compound which will interact with our synthetic molecule naproxen and will help in its separation.
So we will see in the next slide how exactly we do this resolution. I'm giving over here certain examples. अगर आपके पास chiral base है, आपका जो molecule है वो actual उसका nature basic है, और ऐसे chiral basic you can say racemic mixture को आपको separate करना है. So base को separate करने के लिए you can take a help of certain chiral acids. So कौन से chiral acid by you can say default you can use? So you can use plus tartaric acid for the separation of racemic bases. You can use minus form of malic acid. You can use minus form of mandelic acid and plus camphor 10 sulfonic acid. So this can be used for the resolution of racemic base. Now coming to the next point, resolution of chiral acid through the formation of diastereomeric salt require adequate supply of chiral bases. तो अगर आपके पास कोई chiral acid है उसका आपको रिजोल्यूशन करना है, तो जैसे हमने बेस का रिजोल्यूशन के लिए एसिड यूज किया था, वैसे एसिड के रिजोल्यूशन के लिए वी कैन यूज सर्टेन chiral bases. So which are those chiral bases which we can use for the resolution of chiral acid? So we can use a base like brucine, strychnine, quinine, which are naturally occurring bases, and they are alkaloidal drugs. Apart from that, we have certain synthetic molecules like 2-amino-1-butanol, amphetamine, 1-phenylethanamine. ये सभी सिंथेटिक है. तो सिंथेटिक होने की वजह से उनका एक ड्रॉबैक है कि इनिशियली आपको वो कभी प्योर नहीं मिलेंगे. यू विल गेट अ मिक्सचर, बट यू कैन डेफिनेटली डू सर्टन यू कैन से सेपरेशन and you can get a very pure form of 2-amino-1-butanol, pure form of amphetamine and pure form of 1-phenylethanamine. And those enantiomerically pure form can be used further for resolution of certain chiral acids. So from this slide you can take home as for the separation of chiral acids, we can use the chiral base like brucine, strychnine, quinine, 2-amino-1-butanol, amphetamine and 1-phenylethanamine. And for the resolution of chiral bases, we can use certain chiral acids like tartaric acid, malic acid, mandelic acid and camphor 10 sulfonic acid. Here these signs are important, whether we are going to use a dextro form or levo form of it. Coming to the next, if you have certain molecule, for example an alcohol, and you want to resolve that alcohol, so what can be the approach? So I am having a racemic alcohol. So that racemic alcohol can be resolved by using certain enantiomerically pure compound. And from the chemistry knowledge, we know that we can react alcohol with the acid to get an ester. So looking at our starting material, which is alcohol, we can select some enantiomerically pure acid. It can be any acid. It is not very much specific that you should use this particular compound. So you can use any enantiomerically pure acid. So what will happen? This acid with alcohol will form the ester. So as my acid is a racemic mixture, the ester will also be a mixture. No? So that is why I am drawing over here this wavy line. I am not drawing it as a away from or towards the observer because it's a racemic mixture and this is the chiral center. So ये जो chiral center है वो वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा और you will get a diastereomer mixture. So this will become now a diastereomer. अभी ये जो डायस्टीरियोमर है इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं. सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करने के लिए यू विल रिक्वायर अ कॉलम विच इज अ कायरल कॉलम. सो वो कायरल कॉलम यूज करके आप उसको सेपरेट कर दोगे. सो आफ्टर सेपरेशन व्हाट यू विल डू, आपका टारगेट है यू वांट प्योर अल्कोहल ना, बट हियर यू गॉट प्योर ईस्टर्स. ये वन फॉर्म ऑफ ईस्टर है, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द ईस्टर. So what you can do, we know that we can break the ester bond by you can say base catalyzed hydrolysis. So हम क्या करेंगे, इस ester में we will add a base and that base will hydrolyze our ester and on hydrolysis we will get the pure alcohol. So from the racemic alcohol we got the pure alcohol with the help of
इनैंशियोमेरिकली प्योर एसिड। सो हमने इनैंशियोमेरिकली प्योर एसिड के हेल्प से प्योर अल्कोहल बनाए, जबकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एक रेसेमिक अल्कोहल था। सो दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोच। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर कि आपके पास अमाइनो एसिड है। सो देयर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन सिंथेसाइज अमाइनो एसिड इन द लेबोरेटरी। One of the very commonly used method is Strecker synthesis. But Strecker synthesis का drawback ये है कि you will always get the racemic mixture of the amino acid. So how you will resolve that racemic mixture? So for that again you can use the same logics which we have discussed till now. So हमारे पास racemic amino acid है. So ये racemic amino acid का reaction हम करेंगे acetic, as you can say, anhydride के साथ. So what acetic anhydride will do? Preferably it will attack on this amine and it will form the amide of it. So one way I can say कि मैंने ये amine को अभी inactivate कर दिया है. Later on I will allow my acid to interact with pure sodium methoxide. So ये एक naturally occurring pure compound है, pure sodium methoxide. So this methoxide you can see over here is having ONA, so it will interact with, you can say, as good as OH. It will interact with our acid and it will form the ester. So you can see here there is a ester linkage formation. So as our amino acid is racemic mixture, the product which we are going to get as an ester over here will also be a mixture. But this will be a diastereomeric mixture. So you will get a diastereomers of the ester. So now what will be the next thing? We want a pure amino acid, but here we are getting a diastereomer of the ester. So this diastereomer we know from our previous, you can say, discussion. I have already made one video where I have compared the properties of diastereomer with the enantiomer. You can see the link in the I button, even in the description box. So जब भी आपको एक डायस्टेरियोमर मिलता है तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं. इनैंशियोमर को हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव द आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बट डायस्टेरियोमर में क्या हो जाता है, दे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो आपको डायस्टेरियोमर मिला है उसमें से एक डायस्टेरियोमर जो है वो इजीली रिक्रिस्टलाइज हो जाता है बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, तो शायद रूम टेम्परेचर पे ही वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता हो. और दूसरा फॉर्म जो है वो रूम टेम्परेचर पे कंसीडर के लिक्विड फॉर्म में है. तो क्या होगा कि भले आपको डायस्टेरियोमर का मिक्सचर मिला है, उसमें से एक फॉर्म प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल, while other will remain as a liquid. So what you can do, you can just do filtration, or you can say आप क्या करो, you just decant the mother liquor. मदर लिकर में क्या चला जाएगा, आपका कंपाउंड बी, और ए एज अ क्रिस्टल पीछे रह जाएगा. सो ए क्या है, एक ईस्टर है. सो यू कैन ब्रेक द ईस्टर लिंकेज बाय ट्रीटमेंट विद द अल्कली. तो एक सुटेबल अल्कली यूज करके ईस्टर को ब्रेक कर दीजिए. अभी लास्ट में क्या बचा है, द एक्सेस ऑफ दैट अमाइड लिंकेज. ये एक लिंकेज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. सो दिस लिंकेज कैन बी ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग अगेन द अल्कली बट एट अ हायर टेम्परेचर. तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल ब्रेक दिस ईस्टर लिंकेज, देन वी विल ब्रेक दिस अमाइड लिंकेज. तो ईस्टर ब्रेक हो जाएगा तो वी विल गेट फ्री एसिड ग्रुप. अमाइड लिंक ब्रेक होगा, वी विल गेट फ्री अमाइनो ग्रुप. सो इन दैट वे वी कैन गेट अ प्योर अमाइनो एसिड. So you can quote this flowchart also. We had a diastereomer of the ester. We can do a recrystallization or we can say crystallization. On crystallization क्या हो जाएगा, one will remain in a liquid, one will become solid. So जो solid बन जाएगा उसका ट्रीटमेंट अल्कली के साथ करो, you will get a one form of amino acid which will be acetylated at the nitrogen position. तो एक अमाइड इसमें रहेगा. Later on you add 20% of the NaOH, so it will break and you will get R enantiomer. In a similar way you can get the S enantiomer. So this is the way how you can do the separation.
Coming to the next example, resolution of racemic mixture. सो जैसे हमने टॉपिक के स्टार्ट में देखा था नेप्रोक्सेन कंपाउंड, सो यहाँ पर मैं आपको नेप्रोक्सेन का ही एग्जांपल देके फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नेप्रोक्सेन को जब हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं तो हमेशा एक रेसेमिक मिक्सचर रहता है एंड वी वांट टू डू द रिजोल्यूशन ऑफ दैट रेसेमिक मिक्सचर, सो दैट कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग एन प्रोपाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये एन प्रोपाइल ग्लूकोसामाइन जो है दैट इज हैविंग, you can say over here NHPR, there is a propyl group, so this can interact with our acid and there will be a formation of salt. So what we are doing, we are preparing a diastereomeric salt. So diastereomeric salt formation is again one of the approach for the resolution of racemic mixture. तो हमने diastereomeric salt बना दिए। अभी यहाँ पर क्या है कि one of the salt will be soluble in given solvent while other will not be. सो एक सॉल्ट जो है वो सोल्यूबिलिटी उसका गिवन लिक्विड में ज्यादा है व्हाइल अदर का सोल्यूबिलिटी नहीं है। तो जिसका सोल्यूबिलिटी ज्यादा है दैट विल रिमेन इन द लिक्विड फेज, व्हाइल जिसका सोल्यूबिलिटी नहीं है दैट विल बिकम अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड को सेपरेट करेंगे एंड देन एज वी हैड दिस एज अ सॉल्ट, तो व्हाट वी कैन डू, अगर हम उसको एक्सेस ऑफ NaOH उसमें ऐड करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, this salt will break and there will be formation of a pure form of, you can say, naproxen. So it is just a way that acid will precipitate out in acid and base will precipitate out in base. So you will get a sodium salt of S-naproxen. So this is again one of the approach for the resolution of racemic mixture. So this is all about my today's video. So if you are enjoying watching my content, then please don't forget to like my channel, share it with your friends and subscribe it. Thank you for watching Pharmatech.